Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today we will see some important terms which are being used in agriculture. Perennial crop which takes more than 1 year to complete its sowing to harvesting. These kind of crops are called perennials. Then pesticide. Again this term came. Pesticide is used to kill the pests. Then photosynthesis. Photosynthesis is the process in which the plants make their food and generate oxygen and consume carbon dioxide. Then PTO. PTO is power takeoff. It is situated behind the tractor to deliver a rotary power to the implements for rotary implements. Then progeny. It is term used to define the offsprings of any animal. Then rotation or crop rotation. This is a term used to different crops are being sown in one after another in rotation. So this is called crop rotation. We can sow some crops one after another in chain. So this kind of cropping is called crop rotation. Some crops are sown in rows. This kind of cropping is called row crop. Like we want to sow this potato, this is a row crop, or tomato or maize, these all are row crops. Then silage silage is a feed of cattle which is being used to feed the cattle, and this silage is made from the barsim, jawar or bajra. Then sorghum is a cereal crop. Soybean, it is also a cereal crop or oil seed. This is comes under both, and it is a legume crop. Means this crop used, or this crop also fix the nitrogen with the help of legumes present in its roots. Then watershed. A area under rainfall is called watershed, and it has different tributaries from which it collects water from all the area and gives to a common outlet. This is called watershed. Then acre. Acre is a area which is defined as a 0.4 times of a hectare. 1 hectare means 10,000 meter square, means 0.4 times of a hectare is called acre. Then agrochemistry. So chemistry is a branch of science which deals with the chemical change and composition in production of crops. Means what are the different chemical changes are coming in the production of crop and soil. Then agroeconomics. So agroeconomics, the principal and technical technique developed in agronomy, animal husbandry, farm business and economics, benefits and welfare of farmer. Then agriculture engineering. So agriculture engineering is physical problem involved in the preparation of land and production and storage of agriculture products. Means in this agriculture engineering we study about the machines and its use and its डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन. तो इसमें जो हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इसकी पूरी जो मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं जो भी एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे करना है, उनका डिज़ाइन कैसे करना है. दैट इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. देन एग्रोनॉमी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस which dealing with the growing of crops like millets, oilseed, cereals, etc. Means those crops which we can preserve for a long time, that is comes under the agronomy. Wheat we can preserve it for some time, or dry crops. Next is animal science. So it is also a branch of science which deals with the selection, breeding, nutrition and management of domestic animals producing इकोनॉमिकली एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, एग, मिल्क, वूल एंड एट्सेट्रा. इसमें कि हम एनिमल्स का रख रखाव करते हैं, इसका मैनेजमेंट करते हैं कि जिससे हमको उनसे बेनिफिट मिल सके. और बेनिफिट कैसे मिलेगा? मीट प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, वूल प्रोड्यूस करेंगे एंड नई नई ब्रीड्स प्रोड्यूस करेंगे, इससे हमको बेनिफिट मिलता है. देन नेक्स्ट इज एरिड जोन. तो ऐसा एरिया जिसमें कि annual rainfall 10 inch से कम हो. means a area in which the rainfall is below 25 mm, that area is called arid zone. Then breeding, it is propagation of plants and animals. means producing new plants or new offsprings of animals is called propagation of that plant or animals. That is nothing but breeding. Crop insurance is protection against the crop failure.
means these are the schemes provided by government or any organization which provide the insurance। मीन्स कि अगर हमारी क्रॉप को कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाए या हमारी क्रॉप जो पूरी टोटली 100% टाइम डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंट कंडीशन डिपेंडेंट है, मीन्स कि अगर हमारी कुछ भी एडवर्स कंडीशन आती है, रेन हो सकती है या विंड हो सकती है, तो इसके अगेंस्ट में हमारी जो भी इसकी क्रॉप का जो नुकसान हो सकता है जो उसके लिए हमको क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं हम। नेक्स्ट इज ड्रॉट। ड्रॉट इज़ नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल। अगर किसी एरिया पर रेनफॉल नहीं होती है कुछ टाइम, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जब वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो उस पीरियड को हम ड्रॉट और एरिया अंडर ड्रॉट बोलते हैं। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ converging biological material into alcohol, means की anaerobic decomposition of the biological materials is fermentation। garden land, this is a land where the water irrigation well is available within the field। then gene, so the gene is a factor which transmit the hereditary information from one to another और parents to their childs। तो जीन के द्वारा ही हमारी जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से चाइल्ड में आती है और फिर नेक्स्ट चाइल्ड से नेक्स्ट चाइल्ड में जाती है। देन एसिड सॉइल्स, सॉइल्स विच आर हैविंग pH below 7, that those soils are called acid soils। aerobic organism or microorganism which live their life in presence of air are called aerobic and anaerobic। those microorganism which can live in absence of air, that is called anaerobic। then algae, these are small or microorganism which are found in standing water and they reduce the evapotranspiration and produce the nitrogen। then alkali soils, soils which have the pH above 8.5, those soils are called alkali soils। next alkaline soil, the soils which are having pH above 7 called alkaline soil। azotobacterial, सो ऐसे ग्रुप ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि ऐसा ग्रुप जिसमें कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उनको हम एजोटोबैक्टीरियल बोलते हैं। बेंच टेरेसिंग, सो बेंच टेरेसिंग हमारा हिली एरियाज़ में यूज होता है कि जो कि हम लैंड को हिली एरियाज़ में क्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। कि सपोज हमारा हिली एरियाज़ है तो हमारा इस पर क्रॉपिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि बेंच टेरेसिंग करते हैं। कट एंड फिल मेथड से हम इसमें बेंच टेरेसिंग करते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इसमें जो हमारी ये यहाँ से सॉइल उठा के हम यहाँ पे सॉइल डाल देते हैं तो हमारी इस तरह से एक रो बन जाती है। ये इस तरह से हमारा एरिया अवेलेबल हो जाता है जिस पे हम क्रॉप उगा सकते हैं। तो ऐसे हमारा ये एरिया होता है, इस पर हम रो क्रॉपिंग कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से सॉइल उठाएंगे तो हम यहाँ पे डाल देंगे। और दिस इज़ कॉल्ड बेंच टेरेसिंग। एंड ब्रॉड बेस टेरेसिंग, इसमें जिसमें कि हम जो ब्रॉड बेस होता है जिसका हम बेस को ज़्यादा ब्रॉड रख देते हैं तो उसको हम ब्रॉड बेस टेरेसिंग कहते हैं। देन कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि कंटूर क्या है और कंटूर क्रॉपिंग क्या है। तो वही है कि जब हम कंटूर्स के अलोंग ही ऑपरेशंस करते हैं, सोइंग, टिलिंग, प्लोइंग, एवरीथिंग, जो भी हम कंटूर्स के अलोंग करते हैं तो उसको कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। तो हम कंटूर के अलोंग काम कर रहे हैं, हम उसको कंटूर क्रॉपिंग बोलेंगे। नेक्स्ट इज कंटूर ट्रेसिंग, सिमिलर टर्म। अगर हम ट्रेसिंग, ये तो हम अलोंग द स्लोप कर रहे थे, अगर हम अलोंग द कंटूर करेंगे तो उसको हम कंटूर ट्रेसिंग बोलेंगे। देन कंटूर ट्रेंचिंग, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टर्म, कंटूर ट्रेंचिंग। तो इसमें हम जो ट्रेंचिंग करते हैं जिसमें हम वाटर को सेव करने के लिए ट्रेंचिंग करते हैं। ट्रेंचिंग मीन्स वी विल डग सम ट्रेंचेस, दिस ट्रेंचेस में बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो हम ट्रेंच को डग करते हैं वाटर को सेव करने के लिए। तो जो हम अलोंग द कंटूर्स करते हैं दैट इज कॉल्ड कंटूर ट्रेंचिंग। ड्रेन आर द आउटलेट चैनल्स फॉर द ड्रेनेज वाटर, मीन्स इफ वी वांट टू रिमूव द वाटर, एक्सेस वाटर फ्रॉम एनी सॉइल, एनी फील्ड, then we use drains। so these drains are outlet channels, the drainage, this is the term used to define the removal of excess water is called drainage। evapotranspiration is the loss of water from area under the crop, means if area have a lots of crop, then the loss of water from the only crop is called transpiration, means this transpiration is the loss of water from the crop, and evapotranspiration is the loss of water from crop as well as from the ground। if
this ground have some moisture, and this ground is also losing the this moisture. So the combined loss of water from crop and soil is called transpiration, and the evapotranspiration, and loss of water from the only crop is called transpiration. Heavy soils, the soils having the fine textured soils, means a soil having a very small particle size is called fine textured soil, and this fine textured soil is called heavy soil. And this example of this silt, in areas where the silt is more, in that area the soil is heavy. Humus is the material found in the upper layer of the earth crust, which is very important or very nutritive for the growth of plants. Then leaching soil, the removal of soluble salts and chemicals from the soil, मीन्स कुछ जो एल्कलाइन सॉइल होते हैं, जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया एल्कलाइन सॉइल और एल्कली सॉइल। तो जो एल्कली और एल्कलाइन सॉइल में जो एक्सेस सॉलेबल सॉल्ट्स होते हैं, इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम लीचिंग बोलते हैं। देन लाइट सॉइल, दिस इज जस्ट अपोजिट टू द हैवी सॉइल। जहाँ पे हमने फाइन टेक्सचर्ड सॉइल देखी थी और यहाँ पे हम कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल देखते हैं, मीन्स जहाँ पे हम सैंडी सॉइल देखते हैं तो उसको हम लाइट सॉइल बोलते हैं। देन मल्च और मल्च फार्मिंग, mulch is nothing but is organic residue. Mulch farming is used to reduce the water loss from the soil. If we plant some plants in a field, I have discussed about the evapotranspiration, means the loss of water from crop as well as from the ground. So loss of water from the crop we cannot control, but the loss of water from the ground we can control. If we preserve or conserve this moisture in the soil, then there will be less need of giving the irrigation. So if we apply or we place some organic residue to the root of these crops, then it will reduce the loss of water from their roots, and we can consume the moisture for a long. Then next term is normal erosion. So normal erosion is very slow, means if the erosion is the loss of soil from the earth crust. So if the erosion is very slow, then this called is erosion, slow erosion or normal erosion. Then pH is the measure of acidity, means if we want to measure the acidity or basicity of a soil or anything, then we use a term pH. Means if we divide a scale into 0 to 14, a material having mid value is 7. If we mid value is 7 is a neutral value. If we go toward 0, then it will go towards the acidity, and if we go toward the 14, then it will go toward the basicity. Means 7 is a neutral, towards 0 is acidity, and towards 14 is basicity. Then rhizobium are the nitrogen fixing bacteria, as I have discussed about the legumes. So legumes are the rhizobiums which used or which fix the nitrogen in the soil. Soil conservation, so management practice involving plants and soil adapting with preservation and flourishing the soil. मीन्स कि अगर हम सॉयल लॉस को मैनेजमेंट ऑफ द सॉयल फ्रॉम और प्रोटेक्शन ऑफ सॉयल लॉसिंग इज कॉल्ड सॉयल कंजर्वेशन। मीन्स कि हम बेंच ड्रेसिंग वगैरह करें, जिससे कि हमारा स्लोपिंग एरिया है, अगर हमारा इस पर रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल होने से हमारा इरोजन ज़्यादा होगा। मीन्स वी कैन अप्लाई सम मेजर टू check or to stop this soil loss from sloping area. So this type of practices in which we conserve or save to soil from losing, this type of practices are called soil conservation. Soil erosion is the loss of soil from the top surface. Soil fertility is the measure of available minerals and nutrients in the soil. Then soil group is the division of soil according to the texture, structure and color and or many other properties. Means texture is the relative proportion of the sand, silt and clay in a soil. So structure, there are different structures are available: cuboid or blocky soil, cylindrical and many others. Then according to color, we can categorize the soil according to the color: red soil, black soil. Then soil profile. So soil profile is the vertical profile of a soil. Means if we divide the whole soil with a vertical line, we can find four groups of soil. Means A group, B,
C and D. So A is the topmost or uppermost layer of the soil in which we grow the plants. Then nutritive and mineral containing soil. Next B is the sandy soil, or it is a coarse soil which is not useful for the growing of crop. Then third is the coarse soil where the particle size is large. And fourth is a D where we found the rocks, hard rocks. Soil is in form of rock. Soil map is the distribution of soil in a area. Then soil moisture, the water content or water available in a soil in particular area is called soil moisture. Soil organic matter, so organic matter present in a soil is called soil organic matter, means nutrition and minerals. Soil texture is the relative amount of sand, silt and clay present in a soil. Sense soil water percolation, the downward movement of the water inside the soil is called percolation. If water is standing over a area, then this water go downward to the earth due to gravity flow. So this downward movement of water is called percolation. Then topsoil is the uppermost layer of the earth crust which is used to grow the plants or our crops. Then wind erosion, loss of soil due to the action of flowing wind is called wind erosion. Then wind break, then this to check the high speed wind which is cause of loss of soil. To check this wind erosion, we plant some higher plants or which can grow at higher height. Soil loss due to wind erosion is called विंड ब्रेक. आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट ज़रूर करें. जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या हम इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.